સાથે જ આગળ વધીએ, આપણી સાથે બીજા એક મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે. ગઈકાલે પણ આપણે એચડીએફસી ગ્રુપના બધા જ કાઉન્ટર્સની અંદર એક રિઝલ્ટ રિએક્શન જોયું હતું. એચડીએફસી લાઈફ ઇનફેક્ટ માર્કેટ અવર્સ દરમિયાન કંપનીએ રિઝલ્ટ્સ પોસ્ટ કર્યા હતા. તો મેનેજમેન્ટ પાસે જઈએ એની પહેલાં એક વખત જે રિઝલ્ટ્સ પોસ્ટ કર્યા છે એની પર એક નજર કરી લો. EBE ઇઝ ઓલમોસ્ટ 30% યર ઓન યર બેસિસ પર વધતા દેખાય છે. એસ્ટિમેટ્સ પ્રમાણે જ જે આપણે VNB માર્જિન્સ આવતા જોઈ રહ્યા છીએ એ પણ છે. ઇનફેક્ટ ઓવરઓલ 40% ગ્રોથ યર ઓન યર VNBની અંદર વિટનેસ થયો છે, તો એની પર પણ નજર રાખો. વેલ્યુ ઓફ ન્યૂ બિઝનેસ VNBs. એ સિવાય જે કોવિડનો ઇમ્પેક્ટ હતો એને રિલેટેડ 70,000 સુધીના ક્લેમ્સ કંપનીએ Q1ની અંદર પે ઓફ કરી નાખ્યા છે. પ્રોફિટ ફ્રન્ટ પર લગભગ 33% ડિક્લાઇન છે અને સાથે જ EV એમ્બેડેડ વેલ્યુ અહીં આગળથી વધતી દેખાય છે, જે એક બેટર પર્સન્ટેજ હતું. VNB માર્જિન્સ એસ્ટિમેટ નિયરલી જે એક્સપેક્ટ કર્યા હતા એના કરતાં બેટર પોસ્ટ કર્યા છે, તો એની પર પણ ધ્યાન રાખો. ક્યુમ્યુલેટિવલી આ નંબર્સ પર વાતચીત કરીશું આપણે. कंपनी मैनेजमेंट MD અને CEO विभा पडालकर जुड़ाई चुका है. शुक्रिया मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो जिस तरीके से क्लेम्स के अंदर हम लोग एक कांस्टेंट इजाफा देख रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपकी कमेंट चाह रही थी. आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रहेगी? फंड रेजिंग भी ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रोसेस होने की कोशिश कर रहा है. ये पूरा क्वार्टर कैसा रहा, एक हाईलाइट से शुरुआत करें. कोविड क्लेम्स जो सेकेंड वेव हमने देखी है एज वेल एज डेथ्स इन इंडिया, दैट हैज बीन ऑलमोस्ट 3x नहीं तो 4 टाइम्स एज मच एज फर्स्ट वेव. उतने डेथ्स हो गए हैं. तो वी बिलीव दैट हमने जो 700 करोड़ का रिजर्व सेटअप किया है, दैट विल बी प्रूडेंट एंड ओवर द नेक्स्ट मंथ हमको देखने मिलेगा कि हैव द डेथ क्लेम्स continued to stay elevated or they keep coming down. लेकिन today we don't know and so हमने सोचा कि it is quite prudent to set it up, इसलिए हमने 700 crores का रिजर्व सेटअप किया है. However, you have to remember that हमने 165 crores of reserve सेटअप किया था at the beginning of the year. उसमें से ये क्वार्टर में हमने फुल यूटिलाइज नहीं किया है. We have utilized slightly less than 100 crores. 69 crores अभी भी बाकी है. But at 69 crores हमने elevate किया है to take it to 700 crores. इसलिए profit for the quarter has been lower by 33%. लेकिन down the line, by the end of next quarter हमें ये पता चलेगा कि उसमें से 700 crores में से कितना actually utilize किया है और कितना excess है. But as of now, like I mentioned, it is giving us a lot of comfort कि हमने ये setup किया है. अच्छा, 700 करोड़ की जो आप बात कर रही है मैम, अगर थर्ड वेव को हम लोग इसी में काउंटिंग कर लेते हैं, क्या इतना सफाइस होगा? और लास्ट क्वार्टर के क्लेम्स की कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे शेयर कर पाएं. Certainly. आई वांट टू क्लैरिफाई कि थर्ड वेव हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि थर्ड वेव तो एकदम अननोन है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि थर्ड वेव अगर आएगा तो विल इट बी माइल्ड और विल इट बी कि करंट स्ट्रेन का म्यूटेशन हो जाएगा एंड द वैक्सीन विल बी नॉट इफेक्टिव एंड सो डेथ्स विल बी इवन वर्स. हमको एब्सोल्युटली कुछ पता नहीं है कि whether it will be bad, whether it will just be like a flu, और क्या severity होगी. So we just don't know about that. So we have not included. अभी जो information available है उस पे हमने बेस किया है कि how the claims intimation will come through for wave 2. आपने जो numbers पूछे हैं, तो I can tell you that in terms of rupee value of claims, we had expected कि 657 crores का claims आएगा in the first quarter. Against that, almost 300 crores more of claims we have received, which is about 956 crores. Within this 300 crores, about 200 crores relates to COVID. And that is why we have set up, so the 300 crores anyway will hit us. Over and above that, we have set up to take it to 700. बिल्कुल अग्रीड मैम. अच्छा, VNB ग्रोथ, क्योंकि एक अच्छा मूवमेंट हम लोग वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो विटनेस कर रहे हैं. मार्जिन एक्सपेंशन कितना सस्टेनेबल आपको दिख रहा है, एक आइडिया? Absolutely. We think that margins अभी भी थोड़ा scope है to improve, but हमने जो deliver किया है in terms of new business margins, हम काफी खुश हैं. We've delivered 26.2% new business margins.
First quarter of last year was 24.3%. तो almost 200 basis points का expansion रहा है margins पे, and the 26.2% is even higher than the 26.1% of full year margins of FY21. और भी scope है increase करने के लिए. It will be difficult, लेकिन we will aspire to continue to increase our margins. And once we do that, VNB growth will also continue to grow. 40% has been a good growth. इसलिए हमको काफी head start मिला है because quarter one has been good. So hopefully other quarters will also follow.